Welcome to VLAN Virtual Learning Network. Welcome to the fourth session of Advanced Database Handling JDBC Part 1. The topics covered are database, ODBC, how ODBC connection takes place, need for JDBC, JDBC and JDBC driver types, and at the end we will cover JDBC architecture. First of all, database. A database contains data that is in an organized form. डेटाबेस एक कंटेनर होता है जो कि डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कंटेन करता है. Client server applications make extensive use of database programming. Mostly database programming का यूज client server applications में किया जाता है. Activities may involve opening a connection, communicating with a database, executing SQL statements, and retrieving query results. किसी भी डेटाबेस से कम्युनिकेट करना, कनेक्शन को ओपन करना, एग्जीक्यूट करना, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, स्टेटमेंट्स क्रिएट करना, ये सब थिंग्स एक डेटाबेस से रिलेटेड होती हैं. Standardized APIs are available that simplify database programming. Example of these are ODBC and JDBC. किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट APIs अवेलेबल होती हैं, जैसे कि ODBC एंड JDBC, जिनके थ्रू हम किसी भी डेटाबेस से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं. Now we have ODBC. Open Database Connectivity, or ODBC, is an application programming interface or API provided by Microsoft for accessing databases. Means to access any database, Microsoft developed one API known as ODBC. Through that we can connect with any database. ODBC provides functions to insert, modify and delete data and obtain information from the database. ODBC हमें फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं कोई डेटा इंसर्ट करने के लिए, टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, या कोई इंफॉर्मेशन या हम कह सकते हैं सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए. Means ODBC has different functions to execute different queries. Now, how ODBC connection takes place? For example, this is our application and here we have ODBC interface. After that we have driver manager that directly use access driver, oracle driver or any data source driver to connect directly with different databases. To connect with oracle database we have oracle driver. To connect with access database we have access driver. These drivers are accessed by or used by driver manager that is directly interact with ODBC interface. Applications that use these APIs could be a GUI program, makes use of ODBC to interact with databases, and driver manager is a part of Microsoft ODBC and is used to manage various drivers in the systems. Means जिस applications के through हम अपने database से connectivity कर रहे हैं वो applications GUI भी हो सकती हैं. हम
डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए ODBC का यूज़ कर सकते हैं। और ड्राइवर मैनेजर एक पार्ट है ODBC APIs का, जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट ड्राइवर्स को मैनेज करते हैं। नाउ द नीड फॉर JDBC. ODBC uses a C interface that has lot of drawbacks. ODBC APIs C लैंग्वेज में क्रिएट की गई हैं, जिसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a literal translation of the ODBC C interface into a Java API would not be desirable. Means because C is प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मीन्स सी एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो उसकी APIs को जावा, जो कि एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, उसमें कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। ODBC mixes simple and advanced features together and has complex operation even for simple queries. ODBC सिंपल और एडवांस फीचर्स को एक साथ बाइंड करके रखता है, जिससे कि हमें सिंपल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने में भी कॉम्प्लेक्सिटी को फेस करना पड़ता है। A Java API like JDBC is needed in order to enable a pure Java solution. Means हम जावा APIs और हम कह सकते हैं JDBC का यूज़ करते हैं किसी भी जावा प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। JDBC इज ऑल्सो पोर्टेबल, मीन्स JDBC को हम किसी भी कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। JDBC is a standard interface for Java programmers to access relational databases. Means हम JDBC का यूज़ करते हैं एज ए स्टैंडर्ड इंटरफेस किसी भी जावा प्रोग्रामर्स को रिलेशनल डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। Now, what is JDBC? JDBC is a Java Database Connectivity API that is a part of the Java Enterprise API. Means Java Database Connectivity एक API है जो कि Java Enterprise APIs का एक पार्ट है, जिसके थ्रू हम किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। JDBC defines a set of API objects and methods to interact with databases. JDBC generally is a set of object है, means set objects का set है, जिसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। JDBC is a must for all Java applications that access data stored in external data providers like SQL Server, Oracle और Access. Means हम different databases like SQL Server, Oracle या Access, Sybase, Ingress किसी भी डेटाबेस से JDBC के थ्रू इजीली कनेक्टिविटी कर सकते हैं। Now we have different type of JDBC drivers through which we can connect to any database. First one is JDBC driver type 1, known as JDBC ODBC bridge plus ODBC driver. ODBC is not really
कन्वर्टेबल टू जावा मीन्स ODBC को हम जावा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. That's why Sun provides a bridge driver to access ODBC data source from JDBC. That's why Sun Microsoft ने हमें एक ब्रिज प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू हम किसी भी डेटा सोर्स से ODBC के थ्रू कनेक्टिविटी कर सकते हैं फ्रॉम द JDBC. This is called the JDBC ODBC bridge plus ODBC driver. It is the simplest driver to connect with any database. Also, it is one of the slowest driver for the connectivity. Like this. This is our database client having means Java program that directly connected with JDBC ODBC bridge, and after that we can connect with any database like Oracle, SQL Server, etc. We need ODBC driver for that. Now we have type 2 drivers, JDBC type 2 driver known as native API or partly Java driver. JDBC calls are converted into calls on the client API for DBMS. मीन्स हम JDBC कॉल्स को कन्वर्ट करते हैं क्लाइंट API कॉल्स में, जिससे कि हम किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकें. This driver uses Java native interface or JNI that calls the local database API. इस ड्राइवर में हम जावा नेटिव इंटरफेस का यूज करते हैं किसी भी लोकल डेटाबेस APIs को कॉल करने के लिए, और वी कैन से टू कनेक्ट विद एनी डेटाबेस. The native API's partly Java driver calls the native database library that access the database. Type 2 drivers नेटिव डेटाबेस लाइब्रेरीज को कॉल करते हैं किसी भी डेटाबेस को एक्सेस, मैनिपुलेट या उसमें कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए. This driver, like the ODBC driver, needs binary code on the client machine. जैसे कि ODBC में हमें क्लाइंट मशीन पर बाइनरी कोड की रिक्वायरमेंट होती है, सेम टाइप 2 ड्राइवर में भी हमें क्लाइंट मशीन पर बाइनरी कोड की रिक्वायरमेंट होती है. Like this, we have DB client, database client or Java program, and this is type 2 driver, JDBC driver, Java and binary code having connected with database server with vendor specific protocol. Now we have type 3 driver that is known as JDBC Net Pure Java driver. It uses a networking protocol and middleware to communicate with the server. टाइप 3 ड्राइवर में हमें नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स का यूज़ करना पड़ता है, और इसमें हमें एक मिडलवेयर की भी रिक्वायरमेंट होती है सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए. सर्वर देन ट्रांसलेट द मैसेजेस कम्युनिकेटेड टू DBMS स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्स. जब सर्वर को कोई क्वेरी रिसीव होती है तो वो उन क्वेरी को या उस मैसेज को डेटाबेस स्पेसिफिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है. स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज्ड डिपेंड ऑन द वेंडर. इन दिस टाइप ऑफ ड्राइवर वी यूज वेंडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स. In type 3 driver, we don't need for client installation.
It allows access to multiple backend databases. इसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस से कनेक्ट कर सकते हैं. मीन्स फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी के पास डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल ओरेकल, एक्सेस, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, तो वो जेडीबीसी नेट प्योर जावा ड्राइवर्स का यूज़ कर सकती है इन सब डेटाबेसेस से कनेक्ट करने के लिए. Like this is Java program having JDBC driver, pure Java driver with networking protocol and middleware that directly connected with database server and SQL server. This is all about type 3 drivers. Now we have the fourth type of JDBC driver known as native protocol pure Java driver. 100% Java enabled and does not use CLI libraries. ये टाइप 4 ड्राइवर जावा में ही क्रिएट किए गए हैं. मीन्स ये 100% जावा अनेबल्ड होते हैं और इनमें CLI लाइब्रेरीज का यूज नहीं होता है. These are capable of communicating directly with the database. इन ड्राइवर्स के थ्रू हम डायरेक्टली किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हैं. It converts JDBC calls into network protocols such as TCP/IP and other proprietary protocols used by DBMS directly. टाइप 4 ड्राइवर के थ्रू हम JDBC कॉल्स को डायरेक्टली नेटवर्क प्रोटोकॉल कॉल्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि TCP/IP या फिर अदर DBMS कॉल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम डायरेक्ट किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हैं. Since many of these protocols are proprietary, the database vendors themselves will be in the primary source of usage. Means इनमें हमें vendor specific protocols का use करना पड़ता है. Again we have Java program, JDBC driver, pure Java drivers that use vendor specific protocol to connect with any data server or data source. Now we have JDBC architecture. In JDBC architecture, we have Java program that uses JDBC driver having SQL commands to connect application server, and application server is connected with database. After that, the database again send the result back to the JDBC driver and with our program. So this is our JDBC architecture. The JDBC API interface comprises of two layers, application layer and driver layer. Developer makes calls to database through SQL and retrieves result. Developers कॉल्स को क्रिएट करते हैं डेटाबेस के लिए थ्रू एसक्यूएल एंड रिजल्ट को रिट्रीव करते हैं. मीन्स डेवलपर एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए. एंड इन ड्राइवर लेयर इट हैंडल्स ऑल कम्युनिकेशन विद अ स्पेसिफिक ड्राइवर इम्प्लीमेंटेशन. ड्राइवर लेयर के थ्रू डिफरेंट कम्युनिकेशंस को हैंडल किया जाता है. Four main Java interfaces that every driver layer must implement are driver, connection, statement and result set. These are four different interfaces that are mainly used in our Java program to connect with any database. Like this is our application layer. After that, driver layer. Implementation interfaces are driver, statement, result set and connection.
This is complete architecture of JDBC that we use to connect with any database. This is the end of part 1, advanced data sorry advanced database, JDBC. We will cover the next topics in the next part of this session. Thank you. Happy learning, we learning.